हेलो एवरीबॉडी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यह पढ़ा था, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है से पी क्यू आर, इसमें से पी क्यू स्टैंड्स फॉर one vector, say vector A, and QR stands for another vector, say vector B. Then the third side of the triangle in the opposite order, that is PR, PR vector. PR vector will be equal to vector C, that is going to be the resultant of vector A plus vector B. ये triangle law था। अब हम क्या करने वाले हैं, we are going to prove this analytically. ओके, सो इसके लिए आप अगेन देखिए, एक ट्रायंगल आप कंसीडर करिए पी क्यू आर, ठीक है। नाउ पी क्यू स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट वेक्टर, से वेक्टर ए, क्यू आर स्टैंड्स फॉर द सेकंड वेक्टर, दैट इज वेक्टर बी। Second vector, that is vector B, is make an angle theta with respect to the first vector. डायग्राम में क्लियर है। सो ट्रायंगल लोग क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल लोग ये कह रहे हैं PR, that is C vector, and C vector will be the resultant. Okay, now इस मेथड में हम क्या प्रूव करने वाले हैं, we are going to find out what could be the magnitude of the resultant, that is C. All right, and second thing, we will be coming up with the conclusion that what has to be the direction of C vector also. C vector का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और C vector का जो रिजल्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इधर हम C vector का जो डायरेक्शन है वो हम अल्फा ले रहा है विथ रेस्पेक्ट टू A vector, है ना। सो C vector, that is a resultant, is making alpha angle with respect to A vector, ठीक है। सो PQ vector stands for PQ का मैग्नीट्यूड A vector का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। नाउ QR, ये आपका B का मैग्नीट्यूड बन जाएंगे, B vector का मैग्नीट्यूड, एंड PR vector जो होगा that gives a magnitude of what, C vector, ठीक है, फाइन। एंड once again PQ equals to A, all right, QR equals to B, and PR equal to C. So हम एनालिटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले we must have these conclusions, all right। अब आप देखिए what I am going to do is, so हमें जो करना है फाइनली, जो रिजल्ट हमें जो निकालना है, we must come up with this conclusion, है ना। C का मैग्नीट्यूड क्या है एंड C का डायरेक्शन क्या है, this is what we are going to come up with finally, okay। so हमारा जो वो पुराना ट्रायंगल है, I will make that once again। P Q R, all right, this was make an angle theta and here this was alpha। अब आप देखिए, मैं इधर से ना एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे की तरफ, that is meeting at a point say N। इधर आप दो ट्रायंगल देख सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज, देखिए कौन सा, P N
R and this angle is alpha. And मेरा दूसरा right angle triangle है, that is R Q N and this angle is theta. Okay, now first of all let me consider triangle Q N R. ओके, अब आप देखिए हमें पता है क्यू एन अपॉन क्यू आर दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ये बेस है, ये ऑपोजिट साइड हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos थीटा होना चाहिए. इसमें से आप देखिए क्यू एन का वैल्यू क्या निकलेगा, क्यू एन विल बी इक्वल टू क्यू r times cos theta. This has to be theta. Okay, this is cos theta. Fine. So Q1 का वैल्यू क्या निकला, QR cos theta निकला. Okay, what was QR? QR का मैग्नीट्यूड क्या था, that was B. So Qn को मैं क्या लिख सकता हूँ, B cos theta लिख सकते हैं. Okay, now based on the same triangle, अब आप देखिए Rn upon QR, Rn upon QR, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, इसमें से Rn का वैल्यू क्या निकलेंगे, Rn इक्वल टू QR साइन थीटा होगा, isn't it? Now what was QR? QR was equal to capital B, so Rn that equal to कैपिटल B साइन थीटा हो जाएंगे. सो अब देखिए हमारा कंक्लूजन इधर क्या क्या निकल के आया, ये ट्रायंगल सोल्व करके हमें Qn का वैल्यू मिला, Qn as B cos theta and Rn as B sin theta मिला. ऑलराइट, अब आप आइए ट्रायंगल PNR पे, ट्रायंगल PNR. PNR एंगल अल्फा, ये क्यू था इधर तक, है ना. सो अब देखिए इस ट्रायंगल को कंसीडर करते वक्त आई कैन से दैट PN square plus NR square equal to PR square होंगे, है ना, बिकॉज दिस इज राइट एंगल. Pn का वैल्यू क्या है, Pn कैन बी रिटन एज PQ plus QN the all square plus NR square equal to PR square हो जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. व्हाट वाज PQ? PQ क्या था, PQ was equal to कैपिटल A. सो देखिए ये एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल A प्लस Qn इधर है, देखिए व्हाट वाज Qn, Qn was B cos theta, है ना. सो ये क्या हो जाएंगे, B cos theta the all square plus what was Rn या NR, that was B sin theta, B sin theta the all square equal to what is PR, that is C square resultant vector. Now इस bracket open करिए, what this will be, A square plus B square cos square theta, है ना, plus 2AB cos theta plus B square
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सी स्क्वायर बन जाएगा। डू एग्री विथ मी? नाउ इसको सोल्व करते हुए क्या होगा, देखिए आप, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स सी स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप जानते हैं बी स्क्वायर कॉमन है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हियर दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर बन गया। आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1 होता है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स क्या बना, सी स्क्वायर बना। इसमें से आप देखिए सी का वाले क्या आएंगे, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So we got the magnitude of what, vector a plus vector b, है ना, magnitude of vector a plus b, यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, magnitude of vector a plus b that is equal to c, है ना। तो इसका magnitude हमें कहाँ से मिला, इस एक्सप्रेशन से मिला। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अगेन वी विल गो बैक टू द सेम ट्रायंगल। देखिए I believe this was P, this was N, and I need to check that. It was R, yes. It was R. This was the angle, है ना, अल्फा एंगल बना रहे थे। So देखिए, this was Q. अब आप मुझे एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल से बेसिस पे आप ये कह सकते हैं tan of alpha इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, बट इज परपेंडिकुलर Rn या Nr अपॉन बेस क्या हो जाएंगे, Pn. What was Rn? Rn was B sin theta. What was Pn? Pn was PQ plus Qn. That is equal to B sin theta अपॉन PQ क्या था, कैपिटल A, Qn क्या था, B cos theta. So tan of alpha equals to finally हमें मिला B sin theta upon A plus B cos theta. Okay, now हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन, राइट, यानी कि अल्फा का वैल्यू। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan inverse of B sin theta upon A plus B cos theta मिला। ओके फाइन, सो हमें क्या क्या मिला, अल्फा का वैल्यू मिला, यानी कि डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला था, C was equal to अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, यानी कि आपके पास एक वेक्टर A था, this was another vector, it was vector B, this was vector A, and vector B was making theta angle with respect to vector A. Now the resultant of A plus B was vector C. Now C का magnitude क्या बन गया, A मिला, and C was making an angle alpha with respect to A, so alpha का value क्या निकला, ये निकला। So here analytically you got magnitude of the resultant vector C and the direction of resultant vector C as well. So next topic is analytical treatment of
analytical treatment of parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. ओके, लास्ट जो टॉपिक है उसमें हमने ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था, है ना। अब हम इस पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, फॉर दिस सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम कंसीडर करिए, ऐसे देखिए, लाइक दिस, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप P Q R S। Now PQ stands for vector A and say PS stands for vector B। पैरेललोग्राम लो क्या कहते हैं, जो डायगोनल A और B का कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि P, isn't it? That is PR, fine। Now आपका जो PR वेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, A और B का रिजल्टेंट यानी कि C होना चाहिए, fine। So this is what parallelogram law of vector addition says। Now we are going to analytically prove what could be the magnitude of C and direction of C। Okay, so what I did is I made the extension of PQ and extension of R। Okay, and finally you can see it's meeting at point N। You can see this is 90°। Now you know that A and B was make an angle theta, so here this also is going to be what, theta, because parallel, क्या क्या parallel है, PS is parallel to what, QR, है ना। तो A और B जो एंगल बना रहे थे, देखिए, this was B vector and this was A vector। So वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, सेम एंगल इधर भी आ गया। ऑलराइट, नाउ आपका रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि PQ या C वेक्टर, that will be make an angle alpha with respect to PQ या A वेक्टर, isn't it? Now आप देखिए, I am going to consider triangle PNR, triangle PNR, देखिए, PNR, इस triangle PNR से from triangle PNR, alright, we can say that PR square equals PN square plus NR square। What is PR? PR क्या होता है, PR vector equal to your resultant vector C होता है। Okay, so PR square can be written as magnitude of C square, that equal to PN square plus NR square। Okay, now देखिए, what was PN? PN equal to PQ plus QN, है ना। Now आप कंसिडर करिए ट्राइंगल QNR। QNR एंगल थीटा है, so you can say that QN upon QR बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बन जाएंगे
इसमें से क्यू एन का वैल्यू क्या होगा, क्यू एन इक्वल टू क्यू आर cos theta. Similarly, r n upon q r that equal to sin theta बनेंगे। इसमें से आर एन का वैल्यू क्या निकलेगा, आर एन इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा। ऑल राइट, सो अब आप देखिए, अब ये जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू मेक दिस वन मच मोर सिंपलर। कैसे, देखिए सी स्क्वायर इक्वल्स पी एन का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी था, बस पी क्यू प्लस क्यू एन, और क्यू एन का वैल्यू मुझे कहां से मिला, देखो इधर से मिला। सो क्या हो गया, ये सी स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर का जगह पी क्यू प्लस क्यू एन द होल स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर हो जाएंगे। फाइन, व्हाट वाज पी क्यू वाज ए, व्हाट वाज क्यू एन वाज क्यू आर cos theta, क्यू आर cos theta the whole square plus what was nr या rn, that was qr sin theta the whole square. All right, अब आप देखिए c square is going to be a plus what is qr। आप देखिए ये डायग्राम देखना, qr मतलब b होता है ना, qr इक्वल टू ps इक्वल टू b वेक्टर। आई रिपीट, qr vector equals ps vector equals b vector। so qr का जगह क्या हो जाएंगे, b cos theta the whole square, all right, plus b sin theta the whole square। ठीक है, now this is going to give the resultant as a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था, इन दोनों को साथ लिखेंगे। सो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, राइट। सो दिस विल लीव द रिजल्टेंट एज a square plus b square into sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta। ऑल राइट, सो फाइनली c का क्या वैल्यू होगा, अंडर रूट ऑफ this will give the value equal to 1, isn't it? ये 1 हो जाएंगे। so here you are going to get the value as a square plus b square plus 2ab cos theta। c का मैग्नीट्यूड निकल गया हमारा। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, c का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ये देखिए आप, ये ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, पीएनआर है ना। पीएनआर में देखिए इट्स वेरी क्लियर, देखो दिस वाज अल्फा है ना, सो ये अल्फा एंगल है। सो रिजल्टेंट यानी कि पी क्यू वेक्टर जो है दैट वाज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू, इजंट इट। सो इस ट्रायंगल को मैं इधर रीजनरेट कर रहा हूं, देखिए इधर पी एन आर अल्फा, इधर कहीं क्यू थे है ना। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है हमें, डायरेक्शन सी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इजंट इट। सो tan of alpha equal to perpendicular by base r n upon p n, that is r n upon p q
plus qn. Okay, now that is equal to rn का वाली क्या है b sin theta. हम पहले ये कर चुका है कि rn b sin theta कैसे है. pq बोले तो कैपिटल A एंड qn बोले तो b cos of theta. So इसमें से अल्फा का वाली क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta. So my concluding statement is that if you are having two vectors, say vector a and vector b, like this, vector b is make an angle theta with respect to vector a. देख सकते हैं a का सेम डायरेक्शन में मैंने डॉटेड लाइन बनाया हुआ है. Now the thing what we are going to conclude over here is whether it is triangle law of vector addition, okay, or whether it is parallelogram law of vector addition. All right, the resultant of vector a plus vector b, vector a plus vector b equal to, if it is vector c, then the magnitude of vector c is going to be under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, and if alpha is the angle made by c vector with respect to a vector, then alpha is equal to tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta. So this is applicable whether we are following triangle law or whether we are following parallelogram law. All right. Dear students, let us now discuss one example associated to vectors. Okay, so let me explain this question for you. First of all, the question says that we are having a parallelogram ABCD where AC and BD are its diagonals. Now we need to prove that AC vector plus BD vector equal to 2BC, and also we need to prove that AC minus BD vector equal to 2AB. So that's a question. Okay, now let me create this parallelogram for you. First of all, okay, so let this be the parallelogram. Okay, here this is A, here this is A, B, C and D. Alright, so first of all, let us prove the very first part, which was saying that AC vector plus BD vector equal to 2 BC vector. So what is this AC vector? This is AC vector. Okay, next is BD vector. So this is BD vector. This one. This is BD vector. Okay, so first of all I am going to take the triangle ACD, triangle
A, C, D. It's going to look something like this, isn't it? This is A, this is D, and here this is C. Okay, fine. So देखिए, ये हो गया AC vector, ये हो गया AD vector, and this is CD vector. So from here I can write AC vector equals AD vector plus DC vector. Let this be equation number 1. Okay, now let me consider triangle BCD. Triangle BCD. ये देखिए, it's something like this. है ना? ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया आपका D. ये हो गया मेरा BD वेक्टर, ये हो गया BC वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट CD वेक्टर. इसमें से आप देखिए BD वेक्टर इक्वल्स BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बन जाएगा. Let this be equation number 2. Now what I'm going to do is, let me add equation 1 and 2. What this will give, AC vector plus BD vector equals AD vector plus DC vector plus BC vector plus CD vector. हमें पता है DC vector equals to minus of CD vector होता है ना, they are negative vectors. तो क्या हो जाएंगे ये दोनों, एरो पे क्या होगा, 0 होगा. फाइन. सो ये क्या मिल जाएगा, what will be left over here, AD vector plus BC vector. ठीक है, AD vector and BC vector. अब आप देखिए, this is AD vector and here this is BC vector, यानी कि AD vector equal to BC vector है ना. Now considering that fact over here, AD equal to BC, तो क्या हो जाएंगे, BC vector plus BC vector. So finally हमें क्या मिला, AC vector plus BD vector equals to BC vector. This was what we were asked to prove in part 1. So हमारा पार्ट हमारा पार्ट 2 क्या कह रहा था, पार्ट 2 ये कह रहे थे we need to prove that AC minus BD equal to 2AB. For that I'm going to create that parallelogram once again. Here it was AB CD. Okay, this was AC and here this was BD. So BD can be written as minus of DB. So मैं DB create कर रहा हूँ, है ना. माइनस BD बोले तो DB होता है. I repeat, minus BD vector equals to DB vector. तो मैंने DB vector इधर क्रिएट किया. तो इधर आप देखिए AC can be written as AB plus BC, है ना. AB vector plus
BC vector. आपके लिए बना देता हूँ एक बार. We wrote like this. This was AB vector. This was BC vector. And here this was AC vector. Okay. Now come to triangle BCD. इधर आइए, ट्राइंगल BCD पे आइए. देखिए this was DB vector, this was BC vector, and here this is what CD vector, है ना, ये CD vector. Alright, so मैं आपको बोल चुका हूँ कि माइनस ऑफ BD वेक्टर को, माइनस ऑफ BD वेक्टर को मैंने क्या लिखा था, माइनस ऑफ BD वेक्टर को मैंने लिखा DB वेक्टर, है ना. So this is a DB vector, fine. So this DB vector, देखिए, this DB vector equals DC vector plus CB vector है. So अब देखिए DB vector equals DC vector plus CB vector. Let this be equation number 2 and let this be equation number 1. Now what I am going to do is I am going to add equation number 1 and 2. So देखिए AC plus DB equals, which is equal to AC minus BD. Okay, ध्यान रखना, equals AB vector plus BC vector. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 2 में से DC प्लस CB, आप जानते हैं दोनों कैंसिल होगा बिकॉज एक ऑपोजिट एक दूसरे का है ना. CB इक्वल टू माइनस ऑफ BC वेक्टर, तो कैंसिल हो जाएंगे. क्या बचेगा, which will give the value as AB वेक्टर प्लस DC वेक्टर. आप देख सकते हैं AB और DC सेम डायग्राम में, आप देख सकते हैं AB वेक्टर इक्वल टू DC वेक्टर होता है. So finally we are going to get AC vector minus BD vector equals to AB vector. So here this is the proof for part 2. Alright.